Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I am Ashish Bhargav and welcome to another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. In this newspaper analysis, we discuss about all the important news which will be very beneficial for your exam. Majorly, we discuss about the Hindu and Indian Express, so that as we know that most of the exam we cover the most of the question they are fetched from the Hindu and Indian Express. So that in newspaper analysis, we majorly discuss about international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, person in news, summits and conference, miscellaneous and national news. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, which is very important, Supreme Court bills and amendments, which is beneficial for the exam, especially for the law entrance exam like SLAT, AILET and CLAT exam. And we also discuss about the state initiative. And if someone here in the new in this channel, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And one more thing, and in newspaper analysis, I welcome each and everyone here, and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. चलो. So now we start the day with the quote of the day. So quote क्या? If your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. Or to inculcate such kind of thought process, what you need to do, you have to develop the temperament to read the newspaper, because it's very essential for everyone. And every day may not be good, but there is something good in every day. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And questions of the day. So at the end of the exam, at the end of the session, we'll ask to you 5 questions, which gives you the immense idea like what kind of question that can be framed in your examination. Right? Chalo. So now we start. The very first news is here it is. First one is, what is the Rajasthan Right to Health Bill? See, recently, first thing we need to understand that does the Constitution guarantee a right to health? First thing. Second is that what does the bill says and why the people oppose to it. The 3 consequences, 3 portions that we will discuss. So if we talk about the Rajasthan government, the Congress ruling government is the recently concluded budget session of Rajasthan Assembly revived the debate around the right to health bill. And if the legislation, if passed, that will provide mandatory free and affordable medical services in hospitals, clinic and laboratories, both public and private owned. So the private hospital के जो doctors हैं that object to the bill, citing it is hastily drafted, ignores ground realities and may tighten norms in an already over-regulated field. ये bill हमारा कहता क्या है? What does the bill says? Because the Congress-led government tabled the Right to Healthcare Bill 2020 in the Rajasthan State Assembly in September 2022. So it was started in September 2022, and the bill provides the right to patient and healthcare providers, places the obligation on the government to protect these legal rights and mandates the setting up of grievance redressal mechanism. राजस्थान रेसिडेंट के लिए ही होगा, बाहर के लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी. And one more thing that we can say that the bill frames medical services as a public service rather than a vehicle for making money. If enacted, the act will have a recurring annual expenditure of 14.5 crore. So the clause हमारा ये कहता है, like we can say that the bill shift the burden of responsibility in providing adequate medical services to the government. So that does the Constitution guarantees the right to health? Yes. So if we talk about Indian Constitution, does not explicitly talks about a right to health, but we can say that comes under right to health, that comes under Article 21 of the Indian Constitution. Article 21 of the Indian Constitution talking about a right to health, and that comes under
the right to life and liberty. So that is guaranteed under Article 21 of the Constitution. One thing that we need to understand that about the DPSP, which is called Directive Principle of State Policy as well. So previously जो कोर्ट था उन्होंने हाईलाइट किया था द स्टेट ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स एंड पॉइंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 38 है हमारा. आर्टिकल 38 इज प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड आर्टिकल 47 was talking about the government to meet the nutrition and health requirement of the population. So that's why that comes under directive principle of state policy. But you need to keep in mind that directive principle of state policy is not legally enforceable in any court of India. But that is given to the instruction to the state that we need to follow the constitutional provision. Then why the people opposed to it? Because the staunchest resistance to the bill has come from the private healthcare providers, owing the ambiguity around who will pay the mandatory free of cost emergency treatment. That's why there is the people who is in Rajasthan is happy for this bill, but in another instance that we can say that in another side some people are opposed because the reason behind this healthcare service is having a burden of state government as well, and there is an ambiguity that who will pay the free of cost emergency treatment. Now moving further to the next article. Why ISRO, which means Indian Space Research Organization, brought a satellite back into Earth atmosphere? First thing, how was the satellite brought down? So the Indian Space Research Organization brought down a satellite in controlled manner after the end of its life for the first time earlier this week, which was developed a joint mission by Indian and French space agencies that entered the atmosphere after the final two maneuvers Tuesday and burned over the Pacific Ocean. Megatropics first launch किया गया 2011 में, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, so this was the first time that the space agency attempted such a maneuver to clear out space debris, despite the satellite not to be being built to do so. So Escadier still is Kessler syndrome, जिसमें कि एक सिनारियो होता है where space debris होते हैं increase the point where it just creates more one collision and triggering others. What happens to satellites usually? तो जो basically जो हमारा controlled re-entry होती है like at one tempered, but also जो earlier जिसमें जो इसरो ने बताया था कि this possible only for the satellite in the low earth orbit. जो low earth orbit satellites हैं that can be the possible low earth orbit at about 1000 km over the surface of the earth. So these maneuvers however are not usually attempted because adequate fuel reserve have to be maintained in the satellite after mission life is over. So have debris from ISRO satellite rain down? Not really. So almost अगर हम बात करें उसकी तो 99.9% of a satellite burns up in the atmosphere, and we haven't had instance to debris remaining the inhabitant. Now moving to the next article is Silicon Valley Bank contagion may leave India unscathed, say finance ministry official. बेसिकली ये एक यूएसए की बहुत बड़ी बैंक थी ये सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है. क्या इसमें क्या इंडिया की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो द फेलियर ऑफ यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक मे ओनली हिट सम इंडियन टेक स्टार्टअप्स एंड आईटी फर्म्स फ्रॉम नाउ, व्हाइल एनी ब्रॉडर contagion effects that may arise will neither reach Indian shores in a hurry and nor are they likely triggered. ऐसा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं उनका ये कहना है. पर इसमें जानने की हम कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कंसिक्वेंसेस थे. वेट सी बात करें सिलिकॉन वैली क्राइसिस की बात करें तो 1983 में फाउंड किया गया था कैलिफोर्निया बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक फोकसेस ऑन सर्विंग सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स. So it provides multiple services to venture capital, private equity firms, in addition to offering private banking service for high net worth individuals. That is called Silicon Valley Bank. ये स्टार्टअप कब किया गया था? 1983. ईयर को याद रखना इंपॉर्टेंट है. यूएस की बहुत बड़ी बैंक थी. बात करते हैं कैसे. Silicon Valley Bank जो है that has business nearly half of all the US venture backlog startups and 44% of US venture back and tech healthcare firms that went public last year.
दिसंबर 31 के हिसाब से $212 बिलियन एसेट्स थी इनकी। एंड द बैंक क्लाइंट्स इंक्लूड हाउस होल्ड नेम्स लाइक शॉपिफाई, पिनेटसेट एट्सेट्रा, इनके क्लाइंट्स थे। अब ऑब्वियस जो इनके जुड़े हुए क्लाइंट्स थे उनकी भी इकॉनमी क्या हुई, कहीं ना कहीं ख़राब हुई। सो व्हाट वेंट रॉन्ग एट वी कैन से सिलिकॉन वैली बैंक, बात करते हैं इसमें। ये 2021 में स्टार्ट हुआ। सो ड्यूरिंग द फंडिंग बूम ऑफ 2021 सिलिकॉन वैली बैंक ने अमास लार्ज डिपॉजिट्स किया $129 का इन 2021 में, विच पीक्ड अप टू 198 बिलियन। बाद में इन्वेस्ट किया हेवली इन बॉन्ड्स विच वर बीइंग इशूड इन लोएस्ट इंटरेस्ट रेट सिनारियो। और जो बैंक ने था अपनी बैलेंस शीट की 2020 के एंड में उन्होंने बताया कि हमारे पास $19.3 बिलियन की सिक्योरिटीज़ है। 2022 में यूएस फेडरल रिजर्व ने स्टार्टेड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स विच ड्रोव डाउन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग इशू एट लोअर रेट्स। तो ऑब्वियस जब आपकी बॉन्ड मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा प्राइस मिल रही है और आप बहुत कम दे रहे हो, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट को हाई किया। सो दैट ऑल्सो लेड टू वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म कटिंग फ्यूअर एंड स्मॉलर चेक्स टू स्टार्टअप्स ड्यूरिंग टू अ फंडिंग विंटर। बाद में क्या हुआ, एज फंडिंग डिप्लीटेड, डिपॉजिट्स मेड बाय स्टार्टअप्स इन इंस्टीट्यूशन सच एज सिलिकॉन वैली बैंक्स also started declining, forcing the bank to sell securities at a loss of cover up। और बस आपने कोई चीज़ बहुत सस्ती में बेची है, ठीक है, मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आपको कवर अप करने के लिए उस प्राइस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको अपनी, दैट मीन्स यू आर फोर्स टू समवेयर टू सेल द सिक्योरिटीज़। और फिर फाइनली सिलिकॉन वैली बैंक ने अनाउंस किया दैट हैज़ होल्ड $21 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड एसेट्स एट लॉस ऑफ 1.8 बिलियन। उसके बाद उन्होंने बताया कि इट वॉज रेजिंग $2.25 बिलियन वाया शेयर सेल। सो बात करें इसमें कि फंडिंग में ये सारी चीज़ें हुई थी, व्हाट इज इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे इंसॉल्वेंसी होगी। जो नंबर ऑफ लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक कॉटेक मैनेजमेंट, वाई कॉम्बिनेटर, पीटर थियरी फाउंडर्स फंड आर एडवाइजिंग देयर पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स टू विड्रॉ डिपॉजिट फ्रॉम, क्योंकि ऑब्वियस इसमें जो भी फंड्स होंगे, क्योंकि कंपनी को पता है दूसरे कंपनी को भाई ये कंपनी अब बर्बाद होने वाली है, तो जो SBV है, सिलिकॉन वैली बैंक है, वहाँ से लोग डिपॉजिट्स को विड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, दैट इज कस्टमर नॉट टू स्प्रेड पैनिक एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, उससे बैंक की इकॉनमी और ख़राब होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। चलो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या था। दिस वन वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट वन इज़, ये आर्टिकल लिखी है एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक IPS ऑफिसर है। इन्होंने लिखा है कि एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिंग्स। क्या है ये आर्टिकल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मोर देन 4 years ago, पहले से ये समझो कि ये एडल्ट्री क्या होता है। एडल्ट्री विच मीन्स दैट अ पर्सन हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशन विद अ मैरिड कपल, राइट। अगर शादीशुदा लोगों के साथ आपके फिजिकल रिलेशन हैं, देन दैट केस इट कैन बी काउंट एज अ मिड एडल्ट्री। सो मोर देन 4 years ago, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज एडल्ट्री इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट। अब वो जजमेंट हमारा कौन सा था, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस स्टडी याद रखना, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस स्टडी में, इस केस में, इस जजमेंट में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है, राइट। सो इट हेल्ड 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड एडल्ट्री अलॉन्ग विद सेक्शन 190 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द प्रीमिसेस दैट दीज प्रोविजन वर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाद में क्या हुआ, अंडर आर्टिकल 33 Parliament has power to restrict or abrogate the fundamental rights of certain categories of persons, including members of the armed force, to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. The issue of discharge of duty क्या है यहाँ पे? The moot question is whether these observations by the court give an impression that the armed force may go ahead with disciplinary action for the misconduct of adulterous act as understood with common parlance without a reference of section 497 of the IPC. So point made is about establishing that an adulterous act has some nexus with the conduct of person professional duties. तो उसके बाद में एक केस, एक जजमेंट और हुआ था
महेश भाई भूरजी भाई तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। उसमें बताया था गुजरात हाई कोर्ट ने क्वाश किया सेट असाइड द dismissal order of an armed police constable arising from allegations that he had developed illicit relations with a widow which amounted to misconduct. फिर कोर्ट ने इसके बारे में बताया कि दैट इज order to prove misconduct allegation must have some nexus, direct or indirect, right, with the duties to be performed by the government servant as the alleged act was private affairs. आर्टिकल 33 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये इम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स एंड दैट कैविएट ऑफ एज वेल इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। सो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इसमें कि जो सैक्रोसेंट राइट टू प्राइवेसी है दैट इज अवेलेबल इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द आर्म फोर्स एंड द पुलिसमैन एंगेज इन द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कैन नॉट बी टेकन अवे अंडर द guise of the special legislation and the other has some nexus with their duties. So as we can see, section 497 of Indian Penal Code said that whoever have sexual intercourse with a person who is the wife of another man without the consent of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape is guilty to the offence of adultery. The problem is treated women as victim of the offence and as property of husband. It was not an offence if a man had sexual intercourse with a woman after getting her husband consent. बात करें इसमें आफ्टर द जजमेंट की adultery can be ground for divorce but it can no more a criminal offence attracting up to 5 years jail term. So गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है सेंटर्स इसमें जो आर्टिकल दीपक मिश्रा थी उन्होंने भी इसके बारे में बताया था मेकिंग एडल्ट्री अ क्राइम इज रेट्रोरेबल and would mean punishing unhappy people, and any law which dents individual dignity and equity of women in a civilized society invites the wrath of the Constitution. Now, next article is talking about re-imagining the urban-rural dichotomy. ये क्या है आर्टिकल में बेसिकली? तो ट्रेडिशनल dichotomy of rural and urban and the accordingly mandated governance structure seems inadequate to understand and act upon poverty, undernourishment, education, health, environmental management और फिर डेवलपमेंट। बात करें इसमें जो गैप है हमारा अर्बन और रूरल का गैप है उसको कम करने की ज़रूरत है, राइट, बिकॉज दैट शोज़ दैट कि इसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है एंड फॉर बिटवीन टू एक्सट्रीम्स लाइज एन इंटरमीडिएट सेटलमेंट फॉर्मेशन वेयर वी कैन से रूरल एंड अर्बन फंक्शन को एग्जिस्ट विदाउट डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज. Such formation, we can see, evolved due to the interaction of a complex set of geographical, culture, economic and historical process. So under this axiom, it is acknowledged that जो हमारा transition है from rural to urban follows that is graded curve of development and opportunity for social and economic development. Nuances and perspective इसके पीछे क्या है? आर्टिकल 2021 में वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी थी जिसमें बताया था कि लाइक एडवोकेट किया था adopting the notion of urban catchment areas delineated along with the urban rural continuum. Identification of such areas would help understand urban rural interconnection which is we can say important for the making policy decision. 2008 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि बेसाकोडा स्टडी टीम ने रिमेजिन किया कि अर्बन कमेटी से दैट वाज बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ 8 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. सो अक्रॉस जो क्या है हमारा रूरल अर्बन जो कॉन्टिनम है एट दिस इंपॉर्टेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एट द ऑल लेवल. सो इसमें जो टर्म यूज़ किया था उन्होंने दैट इज कॉल्ड देसाकोटा इज एन इंडोनेशिया यूसेज टू डेजिग्नेट द फॉर्मेशन ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिनम. इंडिया की बात करें इसमें तो केरला इज वेल नॉन फॉर द रूरल अर्बन कॉन्टिनम इन द कोस्टल प्लेन्स एंड दिस वॉज नोटेड इवन बाय द मोरोकन ट्रैवलर इबन बतूता इन 14th सेंचुरी में. 14th सेंचुरी में जो ट्रैवलर थे जैसे फाइयान हमारे कंट्री में आए थे सो वो मारे थे इबन बतूता. सो इट वॉज नोटेड ऑन द मोरोकन ट्रैवलर इबन बतूता इन द 14th सेंचुरी. बात करें इसमें अगर जो बैरियर्स हैं ड्यू टू फिजिकल डिस्टेंस इज मेल्टिंग एज इंक्रीजिंग रूरल अर्बन लिंकेज दैट हैज़ गिवन राइज टू डिफ्यूज नेटवर्क रीजन्स. सो
इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रूरल अर्बन के जो गैप है, एरिया दैट आर ऑल्सो विटनेस चेंजिंग इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव लैंड आर बीइंग गिवन फॉर द अदर यूजेस, food security zones are being reconfigured, areas for pollutant filtering are declining. There are the increases in the that was dump, enhanced disaster risk and elevated vulnerability. बात करें इसमें कि ऐसा इससे करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द रूरल अर्बन जो लिंकेज है दैट आर बीइंग मैप्ड एंड विच सैटेलाइट बेस्ड settlement data and its integration with census data may be useful. Next article is talking about women empowerment is a real necessity of time. If you talk about new hopes were sown by few days ago during the Women's Premier League that is called WPL. Its bidding process, 20 professional women cricketers joined the करोड़पति क्लब. सो अगर बाद में जानने की कोशिश करें यहाँ पे कि इसमें इफ़ यू टॉक अबाउट द राइज ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन द कंट्री बिगिन विद द इंडिपेंडेंस. ये हमारी थी सुचेता कृपलानी. सुचेता कृपलानी was the first chief minister, first women chief minister in our country, right? And that was a स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में एक फीमेल, पूरे इंडिया में सबसे फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट बनी थी एक चीफ मिनिस्टर. तो दैट वाज द एरा स्टार्टेड. सो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द स्टडी, 8 out of 10 अर्बन इंडियन वुमेन यूज द इंटरनेट इन सम वे और अदर्स. सो इन द एरा ऑफ इंटरनेट वी कैन से विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोग्रेस इन 21st century. Of course, the situation in rural India is not ideal right now, but as for forward-thinking country, we should strive to see the glasses as half further rather than half empty, right? So think हमारे positive सोचनी चाहिए इस चीज़ के लिए, right? So and one more thing that we can say that let us go in economically backward states such as Bihar, where much has been done to empower women. एंड अगर बात करें बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 की, दैट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, heralding a revolutionary changes following that the Manmohan Singh government attempt to implement it across the country in 2009. Only 28 states ने adopt किया था so far, and regrettably some northeastern states such as Nagaland remains apprehensive about it. So अगर women empowerment की बात करें, इस unique that is called a unquestionable is necessity of the time. Still it won't be proceed at the required rate until the gender ratio of the population represented in a state legislature and parliament is matched. And as we know that since independence till now, despite having many schemes for the government of India has been launched for the welfare and well-being of the women, but we can say in judiciary structure, अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ दूँ, जुडिशरी में आपकी अभी तक हमारे कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं है, बट 2024 में दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री दैट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी वो एक वुमेन होंगी. कमेंट सेक्शन में कोई इसका नाम बताओ, उनका नाम क्या है. नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री बैक्स नॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्रांस पर्सन्स फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया 2017 की गाइडलाइंस को, which exclude transgender person, men having sex with men and female sex workers from donating blood. उसके लिए मना कर दिया कि अगर जो आपके सेक्स वर्कर्स हैं और men having a transgender person वो डोनेट ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते. सो इसमें क्या इस वायलेशन ऑफ राइट्स. जो पिटिशनर है वो आर्ग्यू करता है कि दैट गाइडलाइंस ऑफ द एक्सटेंडेड violated the fundamental right to equality, the right to non-discrimination and the right to life and dignity of these communities. And the issue should be judged from the lens of a public health perspective rather than of the individual rights perspective. Right? So इसको कम करने की ज़रूरत है.
So even on the balance of individual rights of the blood donor versus the right of the recipients, the right of the recipients to receive a safe blood transfusion far outweighs the right of an individual to donate blood. ऐसा मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया. Now the next article is to Silicon Valley that we have discussed already about all these things. INS Shahiyadri joins maritime exercise with French Navy. French 2023 यहाँ पे INS जो है शहयाद्री ने ज्वाइन किया. 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस की है. सो द इंडिया फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइज फ्रिंज एक्स 2023 को भी शेड्यूल किया गया. दैट इज पांगोर मिलिट्री सेंटर इन त्रिवंतपुरम केरला. बात करें तो ये फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी के बीच में. And this is the first time the two countries have engaged in a military exercise in a team format consisting of a company group. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? To enhance interoperability, coordination and cooperation between both forces at a tactical level. Theme क्या है इसका एक्सरसाइज का? Based on humanitarian assistance and disaster relief operations in a contested environment. इंडियन फ्रांस के मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज गरुड़ वो एयरफोर्स की है, फ्रांस एक्सरसाइज वरुणा इंडियन नेवी, और एक्सरसाइज शक्ति विच इज आर्मी. पर्पल रिवोल्यूशन यहाँ पे एक आप देख सकते हो इसमें, दैट इज कॉल्ड वी कैन सी वर्किंग वुमेन इन लेवेंडर फील्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, भादरवा डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे. तो पर्पल रिवोल्यूशन क्या है? दैट इज फॉर द lavender. So it aims to promote the indigenous aromatic crop based agroeconomy by shifting from foreign aromatic of homegrown kinds. First time producer were offered free lavender seeding as part of the goal. इसमें सऊदी अरबिया ईरान should be mindful of pitiful ahead of cold peace में इंडिया की साइलेंस है बीजिंग रोल. इसमें कोई अभी तक आउटकम्स नहीं है. जब तक कोई आउटकम नहीं है वी विल नॉट डिस्कस इन वेरी डिटेल मैनर. एज वी कैन सी adultery that we have discussed already. Okay, the rise of the ECG regulation. So what are the environment, social and governance regulation and how do they differ from corporate social responsibility rule that is called CSR. So ये हमारा CSR एक्टिविटीज़ क्या हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर कि जितने भी फर्म्स हैं हमारे इंडिया में उनको ये बताया जाता है कि आप कुछ पार्ट जो है वो आप कंपनी के लिए खर्च करोगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो ओवर द डिकेड्स रेगुलेशन एंड कॉर्पोरेशन अराउंड द वर्ल्ड हैव embraced the idea that business should be measured not just on traditional economic metric such as shareholder terms but also by their environmental impact, commitment and social issues. So बात करें यहाँ पे ECG regulations की. India has long had a number of laws and bodies regarding environmental, social and governance issues. बात करें ये होता क्या हमारा ECG goals क्या? Environmental, social and governance goals. That is called ECG. That are set to a standards for the company operations that force companies to follow better governance, ethical practices, environmentally friendly measures and social responsibility. So बात करने की अगर इसमें कोशिश करें कि ये फोकस करता है हमारा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए फॉर द गाइडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सो व्हाट डू वी नो अबाउट ECG फंड्स? So ECG funds है kind of mutual fund है and its investing is used synonymously with the sustainable investing or social responsibility investing. That is a part of CSR which is called corporate social responsibility. Corporate social responsibility. And ये ECG फंड्स को रेगुलेट्स कौन करता है? दैट इज दिस फंड इज रेगुलेटेड बाय द सेबी विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे and that questions are very important. That gives you the immense idea like from the reading newspaper what kind of question that can be framed in your examination. Here is the very first article, very first question.
Which one of the following has announced the women icons leading Swachhata wins award 2023 on the eve of International Women's Day? That was on March 8th. Niti Aayog, President Office, Prime Minister Office, Ministry for Housing and Urban Affairs. Option D is the right answer. So to highlight the impact of women in sanitation and waste management, the Union Ministry for Housing and Urban Affairs ने अनाउंस किया women icons leading स्वच्छता award 2023 on the eve of International Women's Day. इसका एम क्या है? It aims to recognize, celebrate and disseminate inspiring and exemplary initiative in urban sanitation and waste management by women-led organization and individual women. Next one. Methane Global Tracker Report is released by which of the following? UNDP, IUCN, WWF and IEA. So in today's session we have discussed about Methane Global Tracker. So you must know about it. The option D is the right answer. International Energy Agency released the annual Methane Global Tracker report in 2023, and the report has come after energy giants like Shell, BP, ExxonMobil reported record profit last year as the Russia-Ukraine wars drove up oil and natural gas prices. National Science Day is celebrated in India on February 28th each year to mark the discovery of black holes, radio waves, scattering of light and Raman effect. So D is the right answer. In the very first time we got the Nobel Prize Award in Physics. So recently National Science Day February 28th was celebrated to commemorate the announcement of discovery of the Raman effect, also known as Raman scattering, by Nobel laureate physicist C.V. Raman in 1928. Fourth one, CO2 emission in 2022 report is published by IUCN, IEA, OECD, UNEP. So B is the right answer. According to IEA, CO2 emission 2022 report, global energy related carbon dioxide emission rose up under 1% in 2022. Next one, H3N2 virus. H3N2 virus is a type of influenza virus called influenza A virus. It is a respiratory viral infection that causes illness every year. This subtype of influenza A virus was discovered in 2021 in humans. This was a wrong statement. So we are left with the only A statement, because third is that is common B, C and D options. So we are left with the A and B option. So H3N2 virus is a type of influenza virus called the influenza A virus. It is called a respiratory viral infection that causes illness every year. This subtype of influenza A virus was discovered in 1968 in humans, not 2021. That was in the statement. So this was all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any question regarding this session, please let me know in the comment section, and we'll meet you tomorrow for the same daily newspaper analysis. Thank you so much for joining with us. Till then, bye bye and take care.